विजय सर बोलतात का? महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि यहां पे जो 3 साल का ब्रेकअप दिया है माननीय मंत्री जी ने 2021 में कंपेयर टू 18-19 एंड 19-20 1.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आपने वसूल किया है, 1.5 लाख करोड़। और उसके बाद आप 5 रुपया और 10 रुपया कम करने के बाद भी जो अप्रैल सितंबर का जो आपका ब्रेकअप दिखा रहा है, कोई फायदा नहीं है, टैक्स उतना ही आप ले रहे हो। मेरी आपसे यही जानना चाहता हूं आपके जरिए मंत्री जी से कि आप पेट्रोल में 10 रुपया और डीजल में 5 रुपया कम करते हो। डीजल वो किसान और आम आदमी के लिए बहुत अहम है, तो डीजल को पेट्रोल के साथ आपने दाम कर दिए हैं। डीजल आज तक कम ही रहता था, जिससे किसान और आम आदमी को फायदा होता था। तो डीजल का शुल्क और कम करने के लिए सरकार तैयार है या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। मैडम, मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूंगा कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं 2010 में, पेट्रोल के जून 2010 में और अप्रैल शायद 2014 में उसके आसपास ये डीरेगुलेट कर दिए गए। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि ये जो दाम है दीज विल बी डिटरमिन्ड बाय इंटरनेशनल प्रिवेलिंग प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म खत्म कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, उसके क्या कारण थे, वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट। आज स्थिति यह है मैडम कि हमने जब देखा कि कंज्यूमर को एकदम रिलीफ पहुंचाने की जरूरत है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 नवंबर 2021 को ये दाम कम किए और हमने और भी कदम उठाए और हम और भी कदम उठाने के तैयार हैं। His specific question, kindly answer specific question. Honorable Minister. नहीं, देखिए डीजल का दाम और करना है कम, नहीं करना है, these are decision। देखिए टैक्स इज वन कंपोनेंट। डीजल का भी 10 करो, यही मेरा क्वेश्चन है। डीजल का तो किया है आप भाई, मैं समझाने, पेट्रोल का 5 किया और डीजल का 10 किया। अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहूंगा, राज्यों ने नहीं किया। जब मैं वो कहता हूं तो वो जो राज्य है वो लोग, उनको थोड़ी सी ये चीज चुभती है कि 9 स्टेट्स, महाराष्ट्र ने नहीं किया, केरला ने नहीं किया और स्टेट्स ने नहीं किया। देखिए, the taxation is only one aspect of it. At the end of the day, we have to provide relief to the consumer at the point of consumption, and a number of steps have been taken, and prices have not gone up. I would like to share some price data. Kindly give a written reply to the member later, because we cannot have a debate. Madam, this is becoming a debate, sir. It's not, madam. Can I complete? This is crucial data. Short answer, please. I have the comparative data for USA, Canada, Germany, UK, France, Spain, Sri Lanka, and India. All those countries, the price of petrol during this representative period has gone up by 50%, 55%, 58%, 55%. India, it has only gone up by 5%. We should be rejoicing that. Instead, what we are hearing from the distinguished members is, why has it not gone up? You have done it. Kindly, Honorable Minister, kindly give a detailed reply later to the member. I think that would suffice. Shri GVL Narasimha Rao. I'd like to thank Honorable Prime Minister and Honorable Minister for reducing the excise duty by 5 and 10 on petrol and diesel. But many states have not reduced VAT. And the highest prices of petrol are today and diesel are in Andhra Pradesh, Maharashtra, Telangana and Kerala. These are the 4 states where the highest prices are there for petrol, Question, diesel. please. And I hope they are equally. Question, please. No, this is a fact. And therefore, I would like to Honorable ask member, Honorable please Minister, sit down. Honorable member, please. when states. Question, please. Yeah, my question is, the states
These states sit have not down. been sensitive because honorable member's Question, question was please, that honorable the member. growing demand for lowering prices, and that such a demand exists in Kerala also. Question, And I would please. like to ask the honorable minister whether he would take up this issue with the concerned state Sure. governments and Honorable request them Minister. to reduce VAT so that the people can get relief. Honorable Minister. The honorable member that we have not only done that in the past, but I would be happy to continue that effort to use whatever limited margin of persuasion we have with the state governments to request them also to reduce the VAT chargeable by them. In some of the cases, the VAT is exceptionally high, and especially when the price is high. But I still see that one point which is being mixed, that the price at the bunk has not gone up. In India, it's gone up by 5%. Rest of the world, it has gone up by 50%. We should be celebrating that in the interest of our consumer, rather than doing nitpicking that you have done this and I have done that. Shri Anand Sharma. Shri Anand Sharma ji. Thank you, Madam Chair. I would like to ask the Honorable Minister, since the petroleum prices are a matter of national concern, and earlier in the previous question, the Minister of Civil Aviation was also referring to the high aviation fuel prices. It's a larger spiraling effect on the economy. When the GST was introduced, in principle it was agreed, when the government and the opposition talked, and the then Finance Minister, late Shri Arun Jaitley ji, that the petrol products eventually would be brought under the GST. Has any progress been made by the government in the GST Council, and what is the response of the states? Will the Honorable Minister speak to the Finance Minister and try to have this matter resolved? Honorable Minister to reply. I can quote the specific article under which this has to be done. I think there have been several discussions. My own memory serves me right, and I believe also that the Kerala High Court at one stage specifically suggested that this be brought on the agenda of the GST Council. And since this requires the unanimity of the GST Council, the issue was, I think, taken up during a meeting of the GST Council, if I remember correctly, in Lucknow. And the proposal did not find favor. Sir, Madam, the honest God's truth is that states which are acquiring high revenue from the sale of petrol and petroleum products, and if I may also add liquor, they are normally reluctant to reduce their revenue from these two sources. And I'm particularly pained in one particular state, which I don't want to name here. They did not reduce the VAT on petrol, but they reduced all their revenue on liquor. So, well, these are priorities which state governments have to set for themselves, and these are also part of the philosophy on what you wish to encourage. But I am, with a sense of responsibility, I tell this House, the government has ensured, and the government will in the coming months also take whatever measures we have to make sure that our consumer gets relief to the extent we can. Now, the price of oil has gone up from $19.56 a barrel to 130 at one stage. Today it's down to 109 or so. Those are situations emanating from a warlike situation. But within that, whatever space we have, wiggle space and margin of persuasion, we should continue to exercise that in the interest of the Indian citizen and the consumer. The same nature, and therefore they will be taken up together. Charge. Serial number 123. मेरा है सर. Minister to lay the answer on the table. Madam, statements both in respect of 123 and 125 have been laid on the table of the House. Charge. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ. वैसे तो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल स्वतंत्र नियामक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार अवैध तरीके से कब्जा करके बैठी है. इनकी जब मर्जी होती है तब उसके दाम बढ़ा देते हैं, और जब चुनाव आता है तो दाम को स्थिर रखते हैं. पिछले कांग्रेस की सरकार के समय में
100 रुपए अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की जब कीमत थी, तब कच्चे माल की कीमत थी, तब 73 रुपए के आसपास 1 लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत थी। और जब कोरोना काल लॉकडाउन लगा, उस समय अमेरिकी डॉलर शून्य हो गया था, तब भी पेट्रोल के और डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं आई। मतलब इनके पेट्रोल और डीजल पे इनका अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना काल के समय ये कहा गया था कि पेट्रोल की कंपनियां धनराशि सरकार को देगी जिससे कोरोना का वैक्सीन लगेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में कितना धनराशि पेट्रोल कंपनियों से आया जिससे वैक्सीन लोगों को लगाया गया, जबकि बजट में 35,000 करोड़ की राशि वैक्सीन के लिए निर्धारित किया गया था। ये माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। मैडम, आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूंगा कि सरकार का कोई इस प्रोसेस पे कब्जा नहीं है। अगर कब्जे की बात होती है, जब एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म था 2010 तक, जून 2010 तक पेट्रोल पे, जब डीरेगुलेशन हुई, डीरेगुलेशन के बाद द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड, द prevailing insurance and freight rates, refining margins, dealer commission and the exchange rate. इसलिए इसमें सरकार का कोई कब्जे की बात नहीं है। Oil marketing companies in a situation of a deregulated process, they take the decisions. अब कभी ऐसा होता है कि कुछ पीरियड में उनकी जो रिकवरी है इससे वो बढ़ जाती है, और कुछ समय होता है, जैसे मुझे लगता है आजकल है, वो अंडर रिकवरी हो जाती है। इसमें ये मार्केटिंग डिसीजन उनको लेने चाहिए। जहां तक चुनाव के साथ ताल्लुकात है, मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा, और आपको तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है। हमारे यहाँ तो 5 साल चुनाव तो होते रहते हैं। अभी 5 स्टेट्स में हुए चुनाव, आपको उसके बारे में जानकारी है। अभी और 5 स्टेट्स में आने जा रहे हैं, शायद अक्टूबर से वो भी होंगे। तो अगर किसी मार्केटिंग कंपनी ने जो निर्णय मार्केटिंग का लेना, वो तो लेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जब हमें लगे इस पे इन्फ्लेशनरी वो है, हमने दाम कम किया। 4 नवंबर 2021 में हमने अपने कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से और देशों के साथ मिलके कुछ हमने क्वांटिटी भी रिलीज की, शायद नवंबर 2021। हम और भी कदम उठाएंगे, पर इन दो चीजों को जोड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। ऐसे तो चुनाव, जैसे मैंने कहा, अभी 5 चुनाव खत्म हुए, दूसरे चुनाव शुरू हो जाएंगे, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निर्णय लेने पड़े। अगर मान लीजिए, मैडम, as I said, the price was $19.56 on 25th March 2020, went up to 130, it's down to 109. Oil marketing companies will take that decision. There will be other, they will proceed. Once they can no longer bear the, if they don't have the margin or the cushion, they will take the appropriate steps. Now, as far as we are concerned, we are doing a number of other steps. One, we are doing more ethanol blending. We have brought it, which was 1.4% in 2014. We brought it to 10%. We are doing other things. अब ऑनरेबल मेंबर ने ये भी पूछा कि वैक्सीन और रेवेन्यू खर्चा, तो आज मुझे शायद उम्मीद थी कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हमने शायद 1.8 करोड़ वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर किए हैं, और इस पे 35,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो उसके दौरान, महामारी के दौरान, सिर्फ वैक्सीन पे खर्चा 35,000 करोड़ ही नहीं, लोगों को 80 करोड़ से अधिक हमारे नागरिकों को दिन का 3 समय का खाना, और एक स्कीम जो मार्च तक चल रही है, हमारे उज्ज्वला सिलेंडर्स। तो मैं अनेक ऐसी लिस्टें हैं जो महामारी के दौरान हमें करना पड़ा, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिए। कोई भी सरकार होती, अगर उनको, if they are sensitive to the requirements of the people, these are steps that you have to do when economic activity comes down. And I am grateful to the Honorable Prime Minister, and so is the nation, as has been witnessed in the events of the last few days. Second supplementary, Chair ji. K.C. Venugopal ji. Whatever may be the reason, despite the rise in crude oil price, the price of petrol and diesel has not been increased since November. Whatever may be the reason, comparing to the period of January 31,
2021, January 1, 2021 and to July 9, 2021, you have increased 63 times the price of petrol and 61 times the price of diesel. Anyway, since November, we are very much relieved because the government is not increasing the prices even though crude oil prices are high. The country need an answer from the minister whether the relief is going to continue or not. Madam, decisions regarding increase and those 63 occasions, I would like to remind the honorable member, some were increased and some were decreased. On 5th March, a political leader made a statement that fill up your tanks quickly because petrol prices are going to go up because the election is over. And the consumption went up by 20%. It is a matter of shame that one statement led to hoarding of 20%. I think we should be conscious of that. I'm very happy to name the person. Honorable Minister, kindly avoid any controversy and please be specific. No, Answer we to the question. are talking about please prices. Avoid controversy and be specific. It's an amazing situation. Please. I'm not yielding. Please sit down. I find it amazing. Please give us that- specific answer I will to give a this question. specific answer. Instead of celebrating that prices have not gone up, my honorable friend is lamenting that they have not gone up. And another one makes a statement and hoarding takes place for 20% after that. So what is it? Should we be controlling prices or should we be making statements to encourage hoarding? Second This is the supplementary. issue. क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिप्लाई आप देना चाहिए वो छोड़ के किसी ने ये कहा आपका प्रारंभ कर लो किसी ने वो Honorable कहा LOP, ये please. रिप्लाई नहीं है Honorable रिप्लाई LOP. स्टेट पूछ रहे हैं कि ये I have already prices क्यों told the बढ़े? minister, क्या Honorable ये Minister. prices अब है ये कंटिन्यू रहेगा क्या नहीं ये क्वेश्चन मैंने Honorable LOP. किसी नौजवान ने ये किया वो किया Next, start there. next supplementary question, K.C. Venugopal ji. Madam, Please Madam. sit down and maintain Madam, I am order. happy. We will have the honorable member ask the second supplementary. Madam, I am happy. Madam, I am happy the honorable minister is trying to He is asking the question. appease his bosses using this platform of question hour. I am happy to do that. But the question is, the government is looting the country by imposing taxes on petrol and diesel. We want Then a whenever the specific question of the question. common people is coming, you are Honorable diverting the member. issue. Whether the government is going Honorable to stop this member, loot. kindly ask No, ask let the me answer question. this. Let me answer this. Who is looting the country? 97% of their candidates lost their deposits. That is what the country's answer to this is. 97% of their candidates lost their deposits. That is the answer. I am calling Who's out. looting? Look, that is, no, and now also, this is their answer. Shri Binoy Vishwamji. I am calling the next member, Shri Binoy Vishwamji. K.C. Venugopal ji. Honorable member, please no controversial statements here. Shri Binoy Vishwamji. Mr. Britas. Mr. John Britas. Mr. John Britas, kindly don't disturb the house. Shri Binoy Vishwamji, please. Please maintain order. Mr. Vishwamji is asking the question. Please be seated, Mr. Binoy Vishwamji. Nothing is going on record. Binoy Vishwamji. Thank you, madam. Sir, not to have a controversy, Please, Binoy sir, Vishwamji. the honorable minister, sir, the minister from his We will foreign check the service, records. Mr. Binoy Vishwamji, only what you say is going on record. Please ask the question. John Britas ji, please say. We will see that. Please, Binoy Vishwamji. Please, let the honorable member ask the question. Yes, Binoy Vishwamji, only what you say is going on record. Please ask the question quickly. yes, sir, my question is that, sir, those benches are creating problems here, not we Please people. ask the question. Please ask the question. The honorable minister, being from the background of foreign service, is well aware of the country called Venezuela. From that country, we used to import oil. In 2020, we imported from Venezuela
371,000 barrels of crude oil. And that country is still there. They still have the resources. Question, I please. asked the government Question, please. why that import was stopped and whether the government has a plan to restart that. Short and crisp answer, please. And crisp, since a reference was made to looting, I would remind you that oil bonds were released, oil bonds were floated. He has not raised that No, the question. previous, let me continue. No, we are only Oil bonds were floated concerned for with Binoy 1,40,000 Vishwamji's crores, question. on which we have had to pay Honorable 3,20,000 crores. we are That is concerned due. with only And Binoy Vishwamji's 2G, coal scam, CWC, I don't want to get into who's looting whom. But on Venezuela, I would like to, I would Honorable like, Minister, please I- don't create controversy. I would Come to like- the answer directly. I Let's am put a answering clear through you, question. madam. Venezuela is a country which was an oil supplier where the oil, All other members, Madam, all please. other members, please sit down. All other members, please sit down. Madam, Venezuela is Mr. a John country which Brittas. was subjected to sanctions by another country. It is our hope and expectation that the oil, not only from Venezuela but other countries under sanction, will become available, and that apart from the oil which will become available by countries who are not supplying on account of sanction, existing OPEC Plus will also increase their production, and I am hopeful that we will all use collectively our margin of persuasion, including the honorable members, to request the international community to make more oil available, including from the country that the honorable member has named, Venezuela. As soon as that oil comes into the market, oil companies will enter into agreements. Equally, Iran is another country which, on account of a particular deal with the United States, I think it's a nuclear issue. There are reports in the public domain that that issue is also likely to be resolved. That will also bring more oil into the market. As far as the government of India and the oil companies are concerned, we are not floating any oil bonds, madam, and passing the Kindly be generation up. brief. We will take all the other steps. We are not indulging in any of those other things which are culture of impunity, which I mentioned, 2G, CWC, etc. We will Okay. take all legitimate steps to try and maintain the price of oil at the bunk at a reasonable level. Shri Thank you, madam. Mohammed Abdullah. Shri Mohammed Abdullah ji. Where is he? है क्या? Yeah. Number 124, You're 123 or 125? 124. No, Ashok, then later. Dr. Ashok Vajpayee ji. माननीय उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मूल्यों में एक रूपता लाने के लिए क्या देश में पेट्रोलियम प्रोडक्टों को जीएसटी की परिधि के अंदर लाने पर सरकार विचार करेगी और इसके लिए प्रयास करेगी, जिससे कि निरंतर जो राज्य सरकारें अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स अपने मन से लगा लेती हैं। Thank you for the short and crisp जी, question. thank you. And I will also Short and try, crisp answer. as I said in response to an earlier question, that the issue of taking it before the GST and having GST coverage on this will depend in equal measure on the state governments. And as I said, we tried once on an earlier occasion, and we did not find the response that was required in order to have GST coverage on this. Shri Vijay Sai Reddy. Thank you, Madam. Any tax that is levied by the central, Madam, Mike, Yes, it's on. any tax that is levied by the central government is shared with the states, and any cess and surcharge that is levied will not be shared with the states. Please do not- Can the honorable minister explain to this August House on what parameters these taxes and cess on petroleum products is decided by the central government, and how frequently these the taxes and cess are reviewed and revised by the central government? Thank you. Thank you. My learned friend has asked this question. The precise formula, I think, would lie in the domain of the Honorable Finance Minister and the Finance Ministry bureaucracy, but I can share some facts with him.
the total contribution of the petroleum sector to the exchequer for the years 2018-19 down to 2021 and April to September 21-22, the central exchequer and the state exchequer. I'll tell you. In 18-19, 5,75,632 crores, 60% centered, 40% went to the states. Similarly, the figure is 60%, 60%, 68%, then comes out 62%, 38%. It's not as if the taxes are only being levied by the center. Center legitimately levies taxes, excise, then uses them for Pradhan Mantri Awas Yojana, COVID, Shauchalay, Ujjwala number. States also levy taxes, and I said the percentage is as high as 40% in most of the time. The formula which is used, I would be very happy to sit with my distinguished colleague and also learn from the finance ministry myself what is the precise manner in which central levies and state levies, how the sharing takes place. Thank you. Question 124. Shri Narayan Das Gupta. 24. Supplementary. मैडम धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि एक समस्या देश में कि कई इलाकों में सूखा पड़ता है, कई जगह बहुत बारिश होती है और जो बारिश का पानी है उसमें फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। तो क्या इन दोनों को हम बैलेंस से कहीं करने का प्रयास कर रही है सरकार कि जहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ पानी वेस्ट होता है? एक जो सरकार की प्रधानमंत्री की भी और ये नदियों को जोड़ने का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी आज क्या पोजीशन है? और दूसरा, जो बारिश में पानी इतना है और बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और आने वाले समय में और भी होगा, उसकी हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की, ताकि वाटर लेवल जो है बराबर बढ़े और पानी की समस्या से हमें जो कहीं न कहीं निदान मिले, उसके विषय में मैं मंत्री से जानना चाहूँगा कि हमारी क्या आज की पोजीशन में स्टेटस है। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। मुझे लगता है कि पानी पे पूछा गया प्रश्न सदन में पैदा हुई गर्मी को कुछ कम करने में सहायक होगा। माननीय सभापति महोदया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है प्रश्न पूछ करके। निश्चित ही सत्य है कि देश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के चलते देश के लगभग 18% हिस्से में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है, लगभग 13-14% हिस्से में हर साल सूखा ऐसा आता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के कारण से इनकी फ्रीक्वेंसी और इरेटिक और स्कैंटी रेनफॉल्स के कारण से, इस रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस के कारण से इसमें निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। माननीय अटल जी के समय ये सपना देखा गया था कि देश में आइडियली ये हो कि जहां डेफिसिट बेसिन में सरप्लस बेसिन से पानी ट्रांसफ़र किया जा सके, और उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया था। उसके आधार पर एक कमेटी बनी थी आदरणीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय सरकार परिवर्तन हो जाने के कारण से 10 साल तक उस विषय पे आगे कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन उसके पश्चात 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में फिर उसमें तेज गति से हमने काम करना प्रारंभ किया। 31 ऐसे लिंक हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफ़र करके इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सकता है। उनमें से अधिकांश की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनी, लगभग जो है 11-12 की उनमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन चुकी है। लेकिन उसमें से क्योंकि जल राज्यों का विषय है, राज्यों को आपस में समझौता करना है, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं और आपके माध्यम से सदन को और देश को इसके बारे में बधाई दे सकता हूं। और यहाँ इस मंच पर, इस पटल पर खड़े होकर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन दोनों ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का समझौता करके एक नए युग का सूत्रपात इस देश में किया है। वेरी गुड। और इस बजट में 4400 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं को बजट में भी जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से बुंदेलखंड में जिस तरह से परिवर्तन होगा, उससे प्रेरणा लेकर के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 से लगातार इस विषय पर चर्चा की है। हमने जल शक्ति अभियान के माध्यम से, हमने अटल भूजल योजना के माध्यम से
और जो है 15वें वित्त आयोग में जो कुल एलोकेशन है उसका 30% एलोकेशन पानी से जुड़े हुए विषयों पर करके, नरेगा में 65% ऑफ टोटल एलोकेशन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर करने के लिए टाइड अप करके इस बारे में इस तरह का वायुमंडल बनाने की कोशिश की। और मैं ये मानता हूं कि आज पूरे देश भर में इसको लेकर के एक नया जो है सोच डेवलप हुई है। लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर लोगों ने काम करना शुरू किया है। अनेक प्रदेशों ने भी इसमें बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री प्रसन्न आचार्य जी। Madam, groundwater has been one of the important source of water for irrigation and drinking purpose also. But surprisingly, as per the CGWB survey report, it indicates that about 30% of the wells monitored, that has been monitored, have registered a decline in groundwater level in different part of the country. So, secondly, Madam, in the mining sector and industries, they are also exploiting groundwater without any restriction. So this is posing a great danger. So I would like to know from the Honorable Minister, what steps are being taken, or has the government taken any step by making regulation or law to put a restriction in excessive use of groundwater in the mining sector, in the industries, and even for other uses? Honorable Minister. महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। निश्चित रूप से भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा भूगर्भ से जल निकालने वाला देश है और हमारी आवश्यकता की आपूर्ति का लगभग 65% हिस्सा हम भूगर्भ के जल से लेते हैं। पेयजल का लगभग 85% हिस्सा भूगर्भ के जल से आता है और उसके कारण से हमारे भूगर्भ जल स्रोतों पर दबाव भी है। 30% ब्लॉक्स की चर्चा माननीय सदस्य ने कही है। मुझे लगता है कि शायद उसके समझने में थोड़ा तकनीकी विषय होने के कारण से कुछ जो है वो फ़र्क हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को आग्रह करूंगा, कभी मुझे अवसर देंगे, मैं इनके साथ बैठ करके और विस्तार से इन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो 30% ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉयटेड है, इनके जो है बेंचमार्क्स क्या हैं। जहाँ तक जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए माइनिंग या इंडस्ट्री को या कॉमर्शियल यूसेस को जो है उसको रेगुलेट करने का विषय हमने ऑलरेडी उसका रेगुलराइजेशन के लिए जो है नॉर्म्स बनाए हैं और उसके ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्टली जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने टेलीस्कोपिक प्राइसेस मैकेनिज्म उसमें दिया है। जितना ज़्यादा पानी जितने ज़्यादा क्रिटिकल जोन में जो ड्रॉ करेगा उसको उसी के अनुरूप जो है सेस अदा करना पड़ेगा और जो पैसा आएगा उसको उस क्षेत्र में वापस ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग हो सके, इसे सुनिश्चित। श्री कामाख्य प्रसाद ताशा। गुड आंसर। मंत्री जी ने एक विस्तृत आंसर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।